सर जिस तरीके से पहले आपने वीडियो में देखा था कि अमेरिका में किस तरीके से नेटिव अमेरिकन लोग रहते हैं जो वहीं के शुरू से ही निवासी रहे हैं, सही उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी लोग रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों को रहस्यमयी काले लोग कहा जाता है या फिर उनको कई लोग एबोरिजिन्स भी कहते हैं। अच्छा, आप इस वीडियो को देखें, उनके बारे में जाने समझे और फिर अपनी प्रतिक्रिया। अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के तो मैं कई वीडियो देख चुका हूँ। आज ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानने का मौका लगेगा और उनकी भी वीडियो देखूंगा। तो इतिहास से जो जुड़ी हुई जानकारी होती है वो मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे। तो ये चीज़ जानने को मिलेगी और देखने को मिलेगी, तो इससे अच्छा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में नाम तो सुना मैंने, बाकी इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। Welcome to Afortista Films, the home of eye-opening African-themed mini-documentaries. And this is the tragic story of Australia's black indigenous population, otherwise called the First Nations or Aborigines. मैंने तो ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोगों के बारे में सुना था, पहली बार पता चला ऐसे लोग भी रहते हैं वहाँ पे यार। जानकारी वाली वीडियो देख रही है यार उस्ताद यार। Once upon a time in the land down under, there lived a proud and ancient people known as the first people of Australia or Aboriginals. They were the original inhabitants of the land, having lived there for over 50,000 years. The First Nations of Australia tribes were deeply connected to the land and its natural resources, and they had a rich spiritual and cultural heritage that was passed down from generation to generation. However, when the Europeans arrived in Australia, everything changed for these people. The settlers claimed the land as their own, and in doing so, they destroyed their way of life. The settlers brought with them new diseases, weapons, and ways of living that the Aborigines were not prepared for. Many of them died as a result of these new diseases and violence. अत्याचार बहुत ही गलत हुआ है। The first people of Australia consist of two distinct groups, the Aboriginal peoples of the Australian mainland and Tasmania, and the Torres Strait Islander peoples. The time of arrival of the first human beings in Australia is a matter of debate and ongoing investigation. The earliest conclusively human remains found in Australia are those of Mungo man LM3 and Mungo lady, which have been dated to around 50,000 years BP. 50,000 साल पहले इनके चेहरे और बॉडी का शेप कुछ अलग ही है। हर जगह की अपनी संस्कृति अलग ही रहती है। Isolated for millennia by rising seawater after the last ice age, Australian Aboriginal peoples developed a variety of regional cultures and languages, invented distinct artistic and religious traditions, and affected the environment of the continent in a number of ways through hunting, fire farming, and the introduction of the dog. Technologies for warfare and hunting like the boomerang and spear were constructed of natural materials, as were musical instruments like the didgeridoo. Although there are a number of cultural commonalities among Indigenous Australians, there is also a great diversity among different communities. The 2022 Australian census recorded 167 Aboriginal and Torres Strait Islander languages used at home by some 76,978 Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. At the time of European colonization, it is estimated that there were over 250 Aboriginal languages. It is now estimated that all but 13 remaining Indigenous languages are considered endangered. Aboriginal people today mostly speak English with Aboriginal phrases and words being added to create Australian Aboriginal English, which also has a tangible influence of Indigenous languages in the phonology and grammatical structure. Around 3/4 of Australian place names are of Aboriginal origin.
Here is a sample of an Aboriginal language. Ayo mewa wala bonande nganaima. Mareo bi. Yawarong, Ro, Yeramandan, Walanga, Yovaria. Kono tawor. ऐसा लग रहा है जैसे साउथ की The first भाषा हो fleet यार ये of तो British यार settlers arrived on instructions to live in amity and kindness with the Aboriginal population. Nevertheless, a population collapse principally from disease followed European colonization, beginning with a smallpox epidemic spreading 3 years after the arrival of Europeans. Massacres and frontier conflicts involving European settlers also contributed to depopulation. As time passed, the settlers' greed and desire for land grew. They took over more and more of the Aborigines' land, destroying their sacred sites and hunting down the animals they relied on for food. The settlers also began to take the Aborigines' children away from their families, claiming that they were doing so to civilize them. These children became known as the stolen generations, and they suffered greatly at the hands of the settlers. Despite all of these hardships, the Aborigines never lost their spirit. They fought back against the settlers, trying to reclaim their way of life. However, their efforts were in vain as the settlers were too strong and too determined to take control of the land. In the end, the Aborigines were forced to live on reserves and missions, separated from their families and their land. They were treated as second-class citizens, denied their rights and freedoms, and forced to assimilate into the settlers' culture. They never lost their spirit. They continue to hold onto their traditions and their culture, passing them down from generation to generation. They also began to fight back, using the courts and the political system to try and reclaim their rights and their land. सही बात है वो भी हर तरीके से अपने अपमान में भी है. जुल्म तो शुरू से ही Today, होते the चले आ रहे Aborigines हैं. are still fighting for their rights and their land, but they have made great strides in recent years. They have been successful in having many of their sacred sites recognized and protected, and they have also been successful in reclaiming some of their land. ये The अच्छी बात है Aborigines' spirit and determination have inspired many people, and their story serves as a powerful reminder of the importance of preserving our cultural heritage and our connection to the land. Thanks for watching, and I'll catch you on the next one. वीडियो अच्छी थी, छोटी थी मगर अच्छी थी और जानकारी अच्छी मिली. क्या बात है, बहुत बढ़िया. मुझे अगर मौका मिला ना तो एक दिन इन लोगों के साथ रहना चाहूँगा और ये लोग कैसे दिन गुजारते हैं ये देखना चाहूँगा मैं. मैं तो ये देखूंगा नाचते कैसे, डांस कैसे करते हैं, वही कर सकता हूँ मैं तो यार. सर ये अपन तो खाने के मास्टर है और ये जो पकाएंगे वो अपन खाएंगे, उनको बताएंगे. अगर मैं गया तो टाटा. ओह मैं दादा सरी का लग रहा है तो पूरे यार. हाँ दाढ़ी सफेद सफेद. तो मतलब ये वीडियो देख के मैं बहुत भावुक हुआ और जो उन लोगों पे अत्याचार हुए उसको देख के मेरा दिल बहुत दुखा है. ये वीडियो देखी, वीडियो में चाहे ये हो या हम इंसान हो या ये इंसान हो या पूरी दुनिया में इंसान हो, अगर अत्याचार हो रहा है तो मेरा दिल बहुत दुखता है. दुनिया में कोई भी हो, सभी भाई बहन के माफी के मेरे लिए. तो चाहे ऑस्ट्रेलिया में अत्याचार क्यों नहीं हो रहा हो, क्योंकि किसके ऊपर भी पूरी दुनिया में अत्याचार होता है नहीं तो मेरा दिल अंदर से बहुत दुखता वाकई में भी. और वीडियो भी बहुत भावुक थी वाकई में भी. दिल अंदर से दुख रहा है अभी तक कि किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं होना चाहिए जिंदगी में. तो अंग्रेज लोगों ने जो जुल्म करे तो वो तो करे ही करे मगर उसके साथ अच्छी चीजें भी देखे गए, जैसे रेलवे लाइन देखे गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखे गए, ऐसी चीजें अपन को देखे गए. सही. अंग्रेज आए, उनको वहाँ पे जुल्म नहीं करना था, क्योंकि प्यार मोहब्बत से भी समझा सकते थे. मेरी नज़र में तो वो उन्होंने अच्छी तकनीकें भी दी हैं, रेलवे लाइन भी डाली है, प्लेन भी उड़ने लगा, नंगे लोग घूमते थे उनको कपड़े भी पहनाए हैं. ये अच्छे काम भी करे उन्होंने. प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहूँगा बस मैं तो इतना ही. सर ये वीडियो देखी, वीडियो देख के
अच्छा लगा, तो इसलिए इसी बात पे मैं गाना सुन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एक रुस मस्तानी कब आएगी तू, चलिया रे चलिया, चलिया रे चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एक रुस मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।